General Bajwa directly, who claimed to have information, had conducted interview. then वो primary secretary की बात नहीं रहेगी. They can ask him directly because he is supposed to have said those statements. नहीं तो अब देखिए वही बात आती है ना कि वो नोटिस इनको देंगे, वो नाराज हो जाएंगे. मुझे क्यों नोटिस दी? कल आप आ जाएंगे शायद मेटला की तरफ से सेक्शन 160 की नोटिस दे दी. कौन सी नोटिस देते हैं उनको? भाई प्लीज आ जाओ. भाई इनका पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे. इन्होंने तो कुछ बताते नहीं है, ना डेट बताते हैं, ना टाइम बताते हैं, ना कहाँ इंटरव्यू हुआ है. भाई सॉरी, दिस इज नॉट जर्नलिज्म. जर्नलिस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स. आई हैड कंडक्टेड. अब हर आखिर तो नहीं हो जाता है ना. On such as to give it credibility to your own statement, on such a date at such a time, at his residence, in a cafe, at my house. What did he say? कुछ तो बता देना. उसका ट्रांसक्रिप्ट ही लगा दें इंटरव्यू का साथ में. बस मैंने कह दिया. बस अब आप उनको नोटिस दे रहे हैं. लास्ट डेट पे यही सारा डिस्कशन हुआ था कि वही आर्ग्यू जो आप कर रहे हैं, आप वही हमसे आप काम करवा रहे हैं कि उनको हम 160 का नोटिस दें, फिर वो हमारे सामने आ जाएंगे. सर वो इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट तो मैंने लगा दिया है, फाइल पे है. हमें क्या करना है उससे ना. भाई suppose हम तो इन्वेस्टिगेटर नहीं है ना. भाई ये तो नहीं मतलब है कल कोई और चल जाए. सॉरी टू से वो नहीं किया. वी हैव सीन सम वेरी डाइसी. ये हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ऐसी ऐसी खबरें चलती हैं जिनका कोई बुनियाद ही नहीं होता है. अगले दिन मेरे वाइफ के मुतालिक झूठी खबर चला दी. भाई चलो ठीक है, चलाते रहो. अब हम सुबह से रात तक सिर्फ क्लैरिफिकेशन ही देते रहे. एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज, ये तो होता है ना फ्लाई बाय नाइट कोई यूट्यूबर ने चला दी, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. हम किसी को कंटेम्प्ट नोटिस तो नहीं हर देश को देंगे. आप कहेंगे ओहो जर्नलिस्ट को कंटेम्प्ट नोटिस दे दी. है नहीं है कि भाई वो चीफ जस्टिस उस मीटिंग में मौजूद. भाई थोड़ा सा खौफ करें. हमारा तो नहीं करें, अल्लाह ताला का सच बोलने. कभी कभी कंप्लीट फैब्रिकेशन. अब ये बस हो गया क्योंकि हमें वो नंबर ऑफ ट्वीट चाहिए ना इतने, हमें ऑफ हिट्स चाहिए. अच्छा लगता है आ जाए खबर में. अब हम पूरे दिन बैठे डिनाई करते रहे. कोई अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हम चाह रहे हैं कि कोई हो नहीं. अब हम नोटिस दें कंटेम्प्ट क्या, बताइए. आप हमें भी तो हेल्प कीजिए ना. फ्रीडम ऑफ प्रेस हम आपसे बार बार पूछते हैं कुछ झूठ के बारे में हम क्या करें. चलने दें. तो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा वही बिकेगा बस बाजार में. यार सब लोग कह रहे हैं. अच्छा तो सच हो गया. वो चीफ जस्टिस की वाइफ ने तरदीद नहीं की, या मैं तरदीद करूं बैठ के. Don't nod your head. It cuts both ways. Yes, certainly. Where falsehoods are propagated maliciously, they should be punished. I'm not saying they're malicious. They may be an honest mistake. ठीक है. They don't reveal their source. Oh, source हमसे ना पूछें. जब नहीं पूछते तो रिट्रैक्शन करते हैं. नहीं, वो भी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो उधर है ना आसमान पे. हम गलती कैसे मान सकते हैं? हम मानने के लिए तैयार होते हैं. रिव्यू जुरिसडिक्शन में एक गलती हो गई हमसे. मगर आप मुझे बता दें कोई जर्नलिस्ट रिट्रैक्शन किया आज तक? मैं आपको 2 झूठ तो मेरे सामने हुए. होती भी है रिट्रैक्शंस. रेप्यूटेबल जर्नलिस्ट करते हैं. रेप्यूटेबल जर्नलिस्ट बिल्कुल, और करनी चाहिए. अगर गलत चीज हो तो रिट्रैक्शन करनी चाहिए. व्हाट डू वी डू? आई मीन कोई पिटिशन फाइल कर दे, अपनी मर्जी की चलाओ, 2-4 प्रोग्राम बनाओ, फिर विड्रॉल कर लो, फिर कुछ और खबर चला दो. बस maybe we should order that all money earned by YouTube we should, गलत हो फिर उसको उससे काटें हम पैसे. What do we do? देखिए, it's not, I don't care about you run any false news about me. I don't care, but it destroys the credibility of the institution. Or you think it doesn't? No doubt. False news, fake news. What will the people think? The wife of the Chief Justice is sitting in a formal meeting. I mean, what will they think? Lord, some news reports are so absurd that perhaps no one believes them. But this, why will not someone believe this? I mean, you know. हमने अपनी सीएम आप प्लीज ठहर जाए ना. आपसे नहीं कर रहे ना बात. आप तो अपने जरा क्लाइंट से अपने इंस्ट्रक्शंस पूरे कर लेना. What do we do? There is, if you're serious about this case, then give us solutions also. My lord, you first date you said issue contempt notices, but can't there be something less than that?
پھر اس کو ہم چارج فریم کریں, پھر اس کو جیل بھیجیں, ہم کیا کریں گے؟ اس سے ہمیں کیا فرق پڑے My گا؟ lord, jab egregious, and that's why I'm saying egregious and malicious stories are published, I believe the remedy is contempt. If it is on a lower level than that, Now, what would you then civil categorize this as, a defamation- lower level or higher level? Sorry, sir. What I just gave you is a factual thing stated as a purported fact. Is this lower or higher level? My lord, I cannot say I've not seen that, but بھائی ہم نے آپ کو بتا دی نا فیکٹس, یہی انہوں نے کہہ دیا اپنے تھم نیل میں, پھر اپنی نیوز میں. my lord, perhaps your lordship would also see the implication and the prejudice caused by the publication. Sometimes that is very, very serious. Sometimes there's misreporting that doesn't, directly undermine. If So anybody, that balance would have to be there. if I'm allowing anybody to interfere in my official functions, I think it undermines the credibility of the judiciary. It's not like I was having tea at cafe so-and-so and turned out it's not cafe so-and-so, it's someone else. Okay, fine, what difference would it make? Nothing. But this is aimed, I mean, I can say it's aimed at undermining the credibility of the institution. I only see it like that. And اس سے ذرا نوٹس ہی بھیجیں گے کہ ہم تو سورسز اپنی نہیں ریویل کریں گے, تو پھر اس کا مطلب آپ کی سورس نہیں ہے, آپ خود مینوفیکچر کر رہے ہیں چیزیں. Stand by your story and say, please, this is becoming a unguided missile. I mean, it consumes everybody. Whoever can just get the maximum number of tweets or hits, and that's how people earn money, I think. If they were not paying money, they would not be doing these things. So, Aldin Saab, you're an officer of the court first and foremost, Yes, sir. not a counsel in the case. Sir. The solution, Sir, will even your association eject such a person? No. Say, yes, we will eject this person from our membership. Will the media house where this person is employed do anything to this person? No. the way. No, because that person is bringing more viewership. Yes, sir. And the So, way. آپ مجھے جواب یہ دے دیں, اگر کوئی جرنلسٹ ثابت ہو جائے جھوٹ بول رہا ہے, آپ کا ایسوسیشن اس کی ممبرشپ کینسل کرے گا یا نہیں؟ Sir, most of them are. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا. ہاں, نہیں کرے گا. No, I'm sure they'll do نہیں, it. شور مجھے بتائیں نا, میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں نا ابھی. کمیٹی ہے جی چینل کی I'll ask them, sir. Of course you will. کہ جب یہ خبر چلی تھی نا تو اس کے بعد نہیں, یہ خبر نہیں یار, جنرلی بات پوچھ رہے نا. Saying, sir, that if a journalist has published false news, then proceedings against him happen. What proceedings? بتا. It is- نہیں, ہم آپ سے بات کریں گے. Sir, بتائیں کیا پروسیڈنگس. sir, ہمارے ڈسپلن ان کو ایک وارننگ دے دیں گے. ہاں, ممبر ہے, ڈسپلن میں نہیں آتا ہم اس کو شوکت بھی کرتے ہیں. شو کوز کرتے ہیں غالباً. پھر کیا کریں گے؟ پورا چلتے رہے نا. ایسوسیشن پھر کیا کریں گے؟ ایسوسیشن سے فارغ کر دیں گے. پھر کیا ہو گیا اس کو؟ کچھ نہیں ہوگا سر اس میں. پھر